There have been severe delays in at least 10 housing projects of Amrapali, and the developer has failed to complete and deliver flats as per commitment made to the Noida Authority. Even in the homes that Amrapali has delivered, the buyers are grappling with lack of facilities. In the Property Show today, we highlight the plight of thousands of stuck home buyers who are left to fend for themselves. आम्रपाली अनिल शर्मा जो प्रदर्शन है ये सिर्फ हमारा एक चेतावनी है। 10 दिन के अंदर इनके ग्रेटर नोएडा या नोएडा में इनका काम स्टार्ट नहीं होता है तो हम सारे बायर्स अनिश्चितकालीन हड़ताल एसएसपी ऑफिस के बाहर बैठेंगे। लोन भर रहे हैं, रेंट भर रहे हैं, ये ईएमआई का और प्लस हम लोग का खर्चा। आप समझिए कैसे रहते हैं नोएडा में, आप लोग समझ सकते हैं सर। हम लोग मेंटली बहुत टायर्ड हो चुके हैं। आप ये ऑफिस के अंदर भी ऑनलाइन कंप्लेंट्स कर चुके हैं। हम योगी सरकार को ट्वीट कर चुके हैं, हम योगी सरकार को बोल चुके हैं, कुछ नहीं हो रहा है। कोई आगे नहीं आ रहा है, कोई योगी सरकार से आगे नहीं आ रहा है, कोई केंद्र सरकार से आगे नहीं आ रहा है। Angry and agitated home buyers protesting against the inordinate delay by Amrapali in delivering housing projects. Amrapali's projects, including Amrapali Sapphire, is delayed. Construction in these projects have stopped. Not even a brick laid in the past several months. We had a tri-party meeting with Noida Authority and builder on 5th of May, wherein builder has submitted his plan of completion, where he said that he will be completing 62 flats in the month of June. Not even a single flat has been handed over yet. Amrapali has collected 95% payment from all the flat buyers in 2012. And neither he has paid to the Noida Authority, nor he has completed the project. This is not the only reason why these home buyers are anxious. A case of insolvency and bankruptcy has been filed against Amrapali Group in the National Company Law Tribunal, which has left these stuck home buyers panic-stricken. NFIR has also been filed against Anil Sharma, CMD of Amrapali Group, invoking charges of cheating and breach of trust for the delay in delivery of Amrapali Leisure Park in Greater Noida. At least 10 projects, including Princely Estate, Silicon City, Golf Homes, Smart City, Dream Valley, Centurion Park and Verona Heights are stuck. हर आदमी सुकून के लिए लेता है और सही मायने में हम लोग आम्रपाली में आके अपना सुकून खो दिए हैं। Exactly. आए दिन यहाँ कुछ न कुछ प्रॉब्लम रहता है। अगर आप बाथरूम गए, आपको पता चला कि अब आज पानी नहीं है। पावर फ्लक्चुएशन का वही हालत है। लिफ्ट में कौन फंस जाएगा किस समय ये कोई नहीं जान रहा है। घर की हालत इंटरनली भी बहुत गंदी है। हम लोगों के पास, हम लोग इतनी लेडीज हैं, शायद हम लोग अभी सबकी एक ही प्रॉब्लम है। सबकी एक ही प्रॉब्लम है। For the 400 residents who have moved into Amrapali Sapphire, which has 1,309 units, life has been hell as out of the 33 lifts, only 9 are working. The society has no sewage treatment plant and no car parking facilities despite having paid all the money. Now all hopes lie with the Noida Authority, and the authority is trying its best to live up to the home buyers' expectations. According to top authority officials, the company Amrapali will be able to complete its flats, and it has strongly refuted the news that home buyers will have to pitch in with more money and complete their own units. In Noida, Oinitam Oja, NDTV.